हेलो, मॉर्निंग Good सर। morning, sir. राइट। कैपिटल बजटिंग में कुछ आप लोगों को डाउट है, कुछ पूछना है आपको? सर परसों जो क्वेश्चन दिए थे वो नहीं बनाया। परसों जो क्वेश्चन दिए थे वो नहीं बना, क्या था क्वेश्चन? So, a project required an initial investment of rupees 22,50,000 and the residual value is expected as rupees 2,50,000. The company is providing 10% depreciation per annum on straight line method. The company is expected to generate profit of rupees 6 lakh, 5 lakh, 7 lakh and rupees 6 lakh over the next 4 years. Good morning, These sir. profits are before. रुक जाओ, सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में बताओ, कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है? 22,50,000. डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? So जैसे ड्यूल वैल्यू माइनस करते हैं 10% उसका। तो 2 लाख माइनस क्या करेंगे? रेसिडुअल वैल्यू करेंगे। यस सर। रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो ये हो गया 20 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? या 10% है? 4 इयर्स है। अच्छा 10%। अच्छा तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 10% ऑफ 20 लाख बराबर 2 लाख। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एवरेज हम लोग को निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट्स निकालना पड़ेगा। यस सर। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया फर्स्ट ईयर का 20 लाख प्लस 18 लाख डिवाइडेड बाय 2 19 लाख। सेकेंड ईयर का हो गया 18 लाख प्लस 16 लाख 17 लाख हो गया ये। यस सर। यस सर। थर्ड का हो जाएगा कितना? 18 में 16 और 14 30 15 लाख हो जाएगा। और फोर्थ ईयर का हो जाएगा 13 लाख। तो अब जब इसको ऐड करके तो 30 और 34 64 ये ऐड करेंगे तो 64 लैक्स होगा। ठीक है, तो हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट्स आ गया कितना? 16 लाख। एवरेज इन्वेस्टमेंट 64 lakhs
डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 16 लाख। ठीक है, अब इसके बाद सर मेरा 21.35 आया था। क्या चीज, परसेंट रिटर्न? यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, रुक जाओ। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट्स करने से पहले का कितना था? 6 लाख। सर 6 लाख है। 6 लाख। क्या क्या एडजस्टमेंट्स था ये बताओ। एक ही है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग और डिप्रिसिएशन नहीं माइनस करेंगे? एनुअल, यस सर, एनुअल डेप्रिसिएशन भी है। यस सर, 20,000, 2 लाख। तो 2 लाख और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है? 40,000 है। सर सर 50,000। 4 साल का है। 50,000 है सर। 50,000 है सर। अरे फर्स्ट ईयर का 50,000। हाँ सर 50,000, 50,000 है। तो ये हो गया 2,50,000 हुआ ना, बराबर कितना हो गया? 3.5 लाख हो गया। अब टैक्स रेट कितना दिया हुआ फर्स्ट ईयर में? सर 30%। सर 30% है। 30%, यानी कि 1,50,000 हो गया। 1,05,000। 5,000, हाँ। 30% 1,05,000 होगा। देखो तो फिर से एक बार। यस सर। यस सर, 1,05,000 माइनस टैक्स, यानी कि 1,05,000। तो इसको कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2,45,000 आ गया। आया ना? यस सर। और इसके बाद बताओ सेकेंड ईयर का क्या है? तो सेकेंड ईयर प्रॉफिट है 5 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 60,000। बराबर 2,40,000। टैक्स रेट कितना है? 30%। 72,000। ये बराबर हो गया 1,68,000। यही होगा ना? यस। यस सर। थर्ड, हाँ थर्ड ईयर में बताओ क्या है? थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40,000 और डिप्रिशिएशन 40%। सॉरी सर, मतलब टैक्स रेट 40%। 40%, 1,84,000 हुआ ना जी इसका। यस सर। तो 4,60,000 माइनस 1,84 कितना हो जाएगा? 2,86,000। 2,76,000 76,000 सर। ठीक है, माइनस 1,84,000, ये बराबर हो जाएगा 2,76,000। अब फोर्थ ईयर का तो प्रॉफिट है 6 लाख और एक्सपेंसेस है 50,000। रुक जाओ एक मिनट। प्रॉफिट है 6 लाख, एक्सपेंसेस 50,000 तो और 2,50,000। टैक्स रेट 40%।
यही ना होगा। अब Yes, एवरेज sir. प्रॉफिट क्या क्या आया था, एवरेज प्रॉफिट बताओ। फर्स्ट ईयर का कितना निकाले थे? 245। फर्स्ट ईयर का 2,45,000 2,45,000 प्लस 1,68,000 प्लस 2,74,000 सॉरी 76,000 76,000 प्लस 2,10,000, ये सबको ऐड करने से कितना आ रहा है बताओ। ऐड करके इसको 4 से डिवाइड करो। दो दो 4 2 6 6 1 7। कोई बताएगा कितना आ रहा है? सर 2,22,750 2 लाख। तो 22,700 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 2,22,750। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना आया था? 16 लाख गुने 100 तो कितना आ रहा है? सर 13.92 13.92। तुम्हारा कैसे आ रहा था इतना जी? सर मैंने डेप्रिसिएशन ऊपर वाला में गलत कर दिया था, 20,000 कर दिया था गलती से। सर 2 लाख का जगह 20,000 कर दिया था गलती से ऊपर में डेप्रिसिएशन। बाकी सब सही था? हाँ सर सब सही निकल गया था, वही ऊपर वाला में चारों में गलत बैठा दिया था मैंने। तुमको कहाँ पे दिक्कत आ रही थी? रोल नंबर 8 प्रॉफिट वाला पार्ट निकालने में से प्रॉब्लम होता है। चलो ठीक है। और कहीं कुछ डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? बोलिए। नो सर। नो सर। सर ARR आएगा 14.04। कैसे? सर यहाँ जो एवरेज क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट आया है ना 2,27,000 नहीं आएगा, 2,24,750 है। चलो ठीक है, जो भी हो। हम लोग आगे बढ़े क्या नेक्स्ट टॉपिक पे? यस सर। यस सर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो तो यही है क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू ही दिया हुआ है। सर एक सेकंड। यस सर वही है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बाद यही। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखवा देते, लिखो तो।
ये जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये डिस्काउंटिंग टेक्निक में आता है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग एडजस्ट करते हैं. वी एडजस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. लिखिए एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. NPV is the difference NPV is the difference between the present value of cash inflows between the present value of Sir, NPV is the NPV difference. difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows and the present value of cash outflows over a given period, over a given period of time. आगे लिखिएगा. NPV method of capital budgeting. NPV method of capital budgeting is helpful in analyzing the profitability of the investment in a project. The profitability Of investment in a project. Full stop. NPV is the result of calculations used to find out present value of a future stream of payments. Full stop. And payments and receipts. आगे लिखिएगा. The NPV method uses a discount rate
the discount rate which may be the cost of capital required to raise the investments full stop. Projects with negative NPV should be rejected. Full stop. Should be rejected. Full stop. आगे लिखिएगा. The NPV method of capital budgeting may go wrong if the projections of future cash flows is incorrect. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, लिखिएगा आगे. NPV looks to assess the profitability of a given investment. NPV looks to assess the profitability of a given investment on the basis that a rupee in the future is not worth the same सर फ्यूचर के बाद is not worth the same, worth WORTH is not worth the same in present. Full stop. Money loses
value over time due to inflation. Money loses value over time due to inflation. Full stop. Full stop. However, ओवर टाइम के बाद due to inflation, full stop. However, a rupee today can be invested Sir, a rupee today can be and earn a return comma making its future value possibly higher than a rupee received at the same point, higher than a rupee received at the same point in the future. Received at The same point in the future. Full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. NPV tries to determine the present value of cash flows of an investment above the initial cost of the investment. Above the initial cost of the investment. Full stop. The discount rate used under NPV sir, the discount rate used discounts the future cash flows Sir, used the NPV. The discount rate used the NPV. used in the NPV है in the को तुम खा गए in the NPV discounts the future cash flows to the present value
आगे लिखिएगा। If the present value of if the summation लिखिएगा, if the summation of the present value of future cash flows is more than the present value of initial investments or initial cost comma, the NPV is said to be positive. The NPV is said to be positive and is accepted. Full stop. But if the NPV is negative, that is the present value of initial cost of investment, the present value of initial cost of investment is more than the present value of the sum total, the sum of the present value, the sum of the present value More than the sum of the present value of cash inflows, comma, the NPV is negative, the NPV is negative and the project is rejected, and the project is rejected, full stop. एक बार पढ़ के देखो इसको, इसको पढ़ के देखना और कहीं कोई डाउट होगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के साथ, और क्वेश्चन भी हम लोग एक सॉल्व करेंगे। ठीक है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।